Hello everyone. Today we'll be discussing one of the important topic of jurisprudence, that is analytical school, along with the objective questions which are being asked in the exam. My main focus will be on the objective questions which are mainly asked in the exams. So starting with the introduction to the analytical school, what is what is the main thought process followed in the analytical school? It is only concerned with the law as it exists. जैसा law है in present, it is only concerned with that. It is not concerned with the past or not with the future of the law. It is only concerned with the law as it exists. The analytical method for studying the law has been used. In this school, mainly the focus has been done on the doing the doing the study on the basis of analytical method, excluding the basic method which was being followed in the natural law school. That was studying the things naturally on the basis of abstract method. This thing has been excluded. The main focus of the analytical school is to study the law as it exists. It is not concerned with the past nor with the future. This is one of the most common line which is being asked in the objective type paper. Concerned with the law as is, neither concerned with the past nor with the future. The jurist of the analytical school considers that relation of law with the state is one of the most important aspects. Due to this law, due to this, law is treated as an imperative, authoritative command or command emanating from the state. This school is known as the imperative school. इस स्कूल में ये कंसिडर किया जाता है कि जो स्टेट जो कमांड देता है दैट इज लॉ दैट इज अ कमांड एंड दैट कमांड इज अथॉरिटेटिव इन नेचर और वो कमांड इन इटसेल्फ इज लॉ एंड इसी वजह से दिस स्कूल इज आल्सो नोन एज imperative school. And the other important question asked in the exam is, who is the founder of analytical school of law? That is Jeremy Bentham. And the other important question which is being asked from this school is, who is the father of the analytical school? That is Austin. There's always difference between the founder and father. Students always get confused between who is the founder and who is the father. Both are different. दोनों अलग अलग हैं. Founder है Jeremy Bentham and father of analytical school है Austin. Or the third important question being asked in the exam is, who is given the term imperative jurisprudence? Imperative jurisprudence is used for the school, analytical school. Analytical school को imperative jurisprudence या imperative school के नाम से भी बोला जाता है. So imperative jurisprudence term दी थी C.K. Allen ने. Systematic jurisprudence term दी थी analytical jurisprudence के concept के लिए किसने? Salmon ने. तो ये 4 important questions हैं. Please take note of that. And main एक्सपोनेंट्स कौन है मेन प्रोपाउंडर्स कौन है एनालिटिकल स्कूल के वो है बेंथम ऑस्टिन हार्ट केल्सन एंड सैलमन नेक्स्ट जर्मी बेंथम वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द एनालिटिकल स्कूल इन्होंने डेफिनेशन दी थी लॉ की जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि लॉ इज असेंबलेज ऑफ साइन डिक्लेरेशन ऑफ वोलेशन कंसीव्ड और अडॉप्टेड बाय सॉवरेन इन अ स्टेट. तो ये डेफिनेशन किसने दी थी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है तो ये बेंथम ने दी थी एंड he has divided the jurisprudence into two parts, that is what the law is, that is expository jurisprudence, and what the law ought to be. He has distinguished between the two factors, what the law is and what the law ought to be. And he has given different terms for both, that is expositorial jurisprudence and censorial jurisprudence. And the
Main theory given by the Bentham is utilitarian individualism, which is always asked who is given this theory, utilitarian individualism. Then it is always Bentham. And one of the important point of his utilitarian individualism theory is, according to him, the end of legislation is greatest happiness of greatest number. And this quote of greatest happiness of greatest number is always being asked in the exam. So please take note of that. And greatest happiness of greatest number is always given by Jeremy Bentham. This concept was given by, this quote was given by Jeremy Bentham. बेंथम सपोर्टर था लेजिस्फेयर का कि स्टेट की मिनिमम इंटरफेरेंस होनी चाहिए द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स. Then other main exponent is Austin. He's known as the father of English jurisprudence, and he's also known as the father of analytical school. इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बुक का नाम है द प्रोविंस ऑफ jurisprudence determined. ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है. Who was the writer or who which was the important work of John Austin, और जॉन ऑस्टिन के मेन वर्क का नाम है द प्रोविंस ऑफ jurisprudence determined. एनालिटिकल स्कूल को पॉजिटिव स्कूल भी बोला गया है. दैट इज बिकॉज ऑफ ऑस्टिन, because he had given the concept of analytical positivism, positive school. So yes, these are all the names of analytical school. ऑस्टिन ने जो डेफिनेशन दी थी कि लॉ क्या है, लॉ इज अ रूल laid down for the guidance of an intelligent being by an intelligent being having a power over him. So law is a rule laid down for the guidance of an intelligent being by an other intelligent being. Austin divides the law as law properly so called and law improperly so called. That divide I'll be discussing in the next slide. That is this law properly so called and law improperly so called. This division was given by Austin. Law properly so called को आगे दो parts में divide किया है, law of God and human laws, and law improperly so called को law by analogy and law by metaphor. Law by metaphor is mostly concerned with the scientific form of laws. Law by analogy is mostly related to positive morality, that is example international law. ऑस्टिन के पार्ट से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है जो पूछा जाता है, three kinds of law which are not command, because Austin used to say that law is a command, and if that command is not being obeyed, then there is a sanction for that. The main three important part of Austin theory is command, duty, and sanction. And anything which is not command, that that three kind of laws which are not command. This question is always asked in the objective exams. That is declaratory laws, laws to repeal laws, laws of imperfect obligations. Then the criticism of this Austin theory. किस पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज करा जाता है ऑस्टिन को कि लॉ, ऑस्टिन always focused on the customs. Oh, sorry, Austin always focused on the command. He does not, he think only origin of law is on the basis of command. जो command है वही law है, and if that command is not being followed, there is a sanction for that, and sanction is in the form of punishment. So criticism है इसका कि customs ऑस्टिन ने completely ignore कर दिए, क्योंकि custom is also source of law. Customs ignored completely, as in earlier times, custom also used to regulate the conduct of the people. Then second point is sanction. Sanction is not only means to induce obedience to law.
The other criticism is कि sanction ही एक only mode नहीं है law को follow करवाने के लिए. There are other modes as well. And one of the important question asked is who is given this quote that indolence, deference, fear, reason can induce man to obey law. Indolence means कि वो act नहीं करना. Deference to do that act. Fear, डर. Reason not to do that act. So these are also the reasons for not doing or for not obeying the which or for obeying the law. So this statement was done by Lord Bryce. Ignored judge-made law. Who ignored judge-made law? Austin, of course, he did not give any reference to judge-made law. Duguid, he also criticized Austin's theory. He said that law is not only a command, but law also confers benefits on the people. State also provide benefits, privileges to people. Like law confers a right to make a will. So this is a benefit. And the next important exponent is Calson. So coming back to the Kelson, his main theory is pure theory of law, which is it excludes everything which is strictly not law. So pure theory of law says that every legal act relates to a norm which gives a legal validity to it. जो भी law है that has been derived from a basic norm, and that norm derives its validity from grund norm. एक ग्रंड नॉर्म है जो भी लॉ है वो उसको वैलिडिटी देता है एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक ग्रंड नॉर्म जिसके थ्रू अदर लॉज आर बीइंग derived. Every legal norm gains its force from a general norm which backs it. Ultimately, the hierarchy relates back to an initial norm called as grund norm, and all the inferior norm derives its force from grund norm. There can be more than one grund norm in any system. A grund norm can be recognized on the basis of effectiveness. जब भी आप trace back करते हो कि whether a law को validity कहाँ से मिल रही है, when you trace back, then you reach a certain norm, and that is the basic norm. That basic norm जो है उसे grund norm कहा जाता है, जहाँ से कैल्सन के अकॉर्डिंग हर लॉ अपना वैलिडिटी डिराइव करता है, अपना पावर डिराइव करता है. And as per Kelson's theory, there is a no difference between private and public law, क्योंकि दोनों ही लॉ अपनी वैलिडिटी कहाँ से लेते हैं, एक बेसिक लॉ से लेते हैं, दैट इज अ ग्रंड नॉर्म. And the criticism given to the Kelson's theory is given by Friedman. He criticized that grund norm is vague and confusing. That grund norm is only a fiction that cannot be, according to Friedman, grund norm exists ही नहीं करता. It is just a fiction that cannot be traced in the reality. So there's always this quote is asked, grund norm is a fiction incapable of being traced out in reality. Then objective में question के answer में you always have to take for Friedman. This quote was given by Friedman. और other criticism क्या है कि purity of norms maintained नहीं करी जा सकती. Purity of norms cannot be maintained if there is an impurity in the grund norm. It will affect the legal norm which emerge out of it. अगर प्योरिटी ऑफ नॉर्म्स कैसे नहीं मेंटेन की जाएगी, अगर ग्रंड नॉर्म में कोई जो बेसिक नॉर्म है जहां से सब लोग अपनी वैलिडिटी ड्राइव कर रहे हैं सारे लॉज, अगर उसमें इम्प्योरिटी है तो लॉज में भी इम्प्योरिटी होगी. सो दिस प्योरिटी theory of purity fails here. The purity of this Kelson theory cannot be maintained अगर ग्रंड नॉर्म में इम्प्योरिटी है. So this was also one of the important point of criticism. The other third point is when legal norms derived from grund norm includes the act of judges, legislator, so their creative touch brings impurity in the Kelson's pure theory of law.
जब कोई ग्रंथ नॉर्म से लॉ डिराइव करा जाता है तो उसमें सिर्फ ग्रंथ नॉर्म से वो डायरेक्टली डिराइव नहीं होता है, उसमें एक एक्ट, उसमें एक प्रॉपर क्रिएटिव टच जाता है, प्रॉपर थॉट प्रोसेस इंक्लूड होता है, किसका, जजेस का, लेजिस्लेटर्स का, जो लॉ बना रहे हैं उनकी भी अपनी प्रोसेस ऑफ थॉट इंक्लूडेड होती है। इसलिए ये ग्रंथ नॉर्म के साथ क्रिएटिव टच भी डिराइव होता है, जिसकी वजह से there's a impurity or you can say the purity theory of the Carson's failed here, क्योंकि उसमें से उनके creative touch is considered as impurity, जहाँ पे कैल्सन की थ्योरी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ फेल हो जाती है। दिस इज द क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट इज हार्ट, HLA हार्ट। हार्ट रिजेक्टेड the Austin's concept of command, rejected the model based on the coercive orders। हार्ट ने रिजेक्ट कर दिया था लॉ का coercive orders, मतलब जो ऑर्डर्स कमांड और सैंक्शन, जो लॉ कमांड से हो और कमांड अगर नहीं फॉलो की जाए उसके लिए सैंक्शन हो, वो कंसेप्ट दिया था ऑस्टिन ने। बट ऑस्टिन का ये वाला कंसेप्ट हार्ट ने एक्सेप्ट नहीं करा था। हार्ट का मेन बुक था द कंसेप्ट ऑफ लॉ, दिस वाज हिज मेन बुक। एंड एज पर हार्ट लॉ प्रिस्क्राइब्स द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। लॉ क्या है, एक स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट बताता है जिसको सबने एडहर करना होता है, नॉट बिकॉज ड्यू टू द सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, नॉट बिकॉज कि ये ड्यूटी है आपकी इस स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, इसलिए लोग एडहर करते हैं क्योंकि सबको ये एडहर करना है, क्योंकि सबकी ही ये सेम ऑब्लिगेशन है इस स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने की। द अदर Hart state that the Hart's main theory states that law as union of primary and secondary rules। लॉ क्या है, यूनियन है प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स का। अब इन्होंने, हार्ट ने बताया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स क्या है। प्राइमरी रूल्स लेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एंड रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशंस, कि बेसिक रूल्स क्या है, क्या लॉ है, क्या चीज पनिशेबल है क्या नहीं है, वो सारी चीजें प्राइमरी रूल्स में आ जाती हैं। जैसे कि आईपीसी में बताया गया है कि थेफ्ट के लिए क्या पनिशमेंट है, मर्डर के लिए क्या पनिशमेंट है, मर्डर के क्या क्या, क्या चीज मर्डर है, क्या चीज कल्पेबल होमिसाइड है, रेप क्या है, रेप में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट क्या है, इनकी पनिशमेंट क्या है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी रूल्स। अब सेकेंडरी रूल्स क्या है, कि प्राइमरी रूल्स ने तो ये बता दिया है कि क्या चीज ऑफेंस है क्या चीज ऑफेंस नहीं है। अब सेकेंडरी रूल्स क्या है, आर ancillary which are specifies the ways in which the primary rules may be ascertained। सेकेंडरी रूल्स ये बताते हैं कि प्राइमरी रूल्स जो, अब जैसे कि बता दिया गया कि थेफ्ट क्या है, अब थेफ्ट है तो उसके लिए कंप्लेंट कहाँ करनी है, अगर रेप हुआ है तो उस पर एफआईआर कहाँ करनी है, ये सब चीजें सेकेंडरी रूल्स में बताई जाती हैं। These are the things are being mentioned in CRPC example। So CRPC, CPC, these are the example of secondary rules। So secondary rules क्या होते हैं, रेमिडियल होते हैं, प्रोसीजरल होते हैं। सेकेंडरी रूल्स रेमेडी प्रोवाइड करते हैं और प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं, कि अगर आपको बेल चाहिए तो बेल कैसे मिलेगी, और बेल का प्रोसीजर सेकेंडरी रूल्स का एग्जाम्पल है। जो बेल का कहाँ बताया गया है कि प्रोसीजर क्या है, सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सो सेकेंडरी रूल्स का एग्जांपल है सीआरपीसी, सीपीसी। सेकेंडरी रूल्स स्टेप फ्रॉम प्री लीगल टू लीगल वर्ल्ड। सेकेंडरी रूल्स क्या है, एक स्टेप है जहां से आप लीगल वर्ल्ड में एंटर करते हो। सेकेंडरी रूल्स के बाद बताया, पॉइंट क्लियर है कि सेकेंडरी रूल्स के एग्जांपल है सीआरपीसी, सीपीसी, जिसमें प्रोसीजर बताया जाता है और रेमेडीज बताई जाती हैं कि जो बेसिक लॉ है उसको अप्लाई कैसे किया जा सके। और जो बेसिक लॉ है वो कहाँ दिया गया है, वो प्राइमरी रूल्स में दिया गया है। प्राइमरी रूल्स गिव्स वे टू द सेकेंडरी रूल्स। जब प्राइमरी रूल्स से पता लगता है कि क्या ऑफेंस है क्या चीज नहीं है, उसके बाद ही जो ऑफेंस है उसको अब जस्टिस कैसे मिलेगा, उस ऑफेंस के लिए कोर्ट में क्या रूल्स फॉलो होंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, दैट थिंग इज प्रोवाइडेड इन दी सेकेंडरी रूल्स।
So criticism to Hart's theories कि हार्ट अप्रोच emphasized extremely on socially constructive function of law. हार्ट की जो अप्रोच थी it only emphasized on socially constructive function of law. एंड फुलर की जो एक स्टेटमेंट है क्रिटिसाइज जिसके बेसिस पे उसने हार्ट की थ्योरी को क्रिटिसाइज करा था दैट इज लॉ कैनॉट बी डिवोर्स्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मॉरालिटी क्योंकि हार्ट नेवर डिस्कस्ड अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू मॉरालिटी सो द स्टेटमेंट was given by law cannot be divorced from the concept of morality was given by Fuller. This is the important objective type question you can say, which is always being continuously asked in the exams. Law cannot be divorced from the concept of morality. Who has given this quote? Then it is Fuller. जॉर्किन ने क्या क्रिटिसाइज किया था कि सब कुछ रूल्स के जो कोड ऑफ रूल्स है उसके बेसिस पे कंसीव नहीं करा जा सकता एक लीगल सिस्टम एक इंस्टीट्यूशन पे बेस्ड होता है जिसमें स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज तीनों इंक्लूडेड होता है सो ये वाली स्टेटमेंट किसने दी थी लीगल सिस्टम इज इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन standard principles and policies. This statement was given by Jorkin. So, this was the criticism for the hard theory. All the important questions are being discussed in this PPT, जो mainly analytical school पे में से आते हैं. सबसे ज़्यादा confusion होती है father of analytical school and founder of analytical school. उस क्वेश्चन को हमेशा क्लियरली लर्न करें क्लियरली याद करें उसका आंसर फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल इज ऑलवेज ऑस्टिन एंड फाउंडर इज जर्मी बेंथम I hope this video helps you to get a brief over this topic of analytical school and please if you like the content please do like share and subscribe my channel and please follow for more legal content. Thank you so much.